Hi guys and welcome to MB's Man Cave. There are some stories that are greater than us, greater than life, greater than the spirit itself. Because आज की जो हमारी स्टोरी है that is greater than jinn. जी हाँ, greater than jinn. There are so many jinns we have talked about and we will talk about in the coming days. But जब हम बात करते हैं जिन की रेनेसॉन्स की, जिन का जो एक बूम चल रहा है, स्पेशली इंडिया में, जिन इज गेटिंग पॉपुलर बाय द डे. देयर आर मोर एंड मोर पीपल हु आर कन्वर्टिंग टू जिन. एंड आई थिंक जब हम बात करते हैं इस टॉपिक पर, देयर इज वन जिन वी सिंपली कांट फॉरगेट दैट in itself has an important chapter अगर हम हिस्ट्री ऑफ जिन इन इंडिया के ऊपर एक बुक लिखेंगे, एंड दैट इज ग्रेटर देन जिन. जब मैं इस रिव्यू की स्क्रिप्ट लिखने बैठा, और जब भी मैं करता हूँ, आई ऑलवेज रिसर्च ऑन द ब्रांड, उनकी स्टोरी के बारे में क्या हिस्ट्री रही है, वो सब मैं रिसर्च करता हूँ एंड देन आई प्रेजेंट इट टू यू गाइज. बट I am surprised to read. I knew कि Greater Than Gin is a new gin. It's not very old. It's a new brand, but it was only launched in 2015. That is simply mind blowing. Delhi-based Anand Virmani and Vaibhav Singh, they decided that they wanted to make their own gin, and they started with Greater Than Gin. ये स्टोरी कोई बहुत ज़्यादा आई थिंक इंस्पायरिंग नहीं लगती है. आज की डेट में इतनी सारी जिन्स आ रही हैं, इतने सारे अल्कोहल के ब्रांड्स आ रहे हैं, छोटे छोटे स्टार्टअप मिलकर अपनी ब्रांड्स शुरू कर रहे हैं. सो इट्स नॉट रियली सरप्राइजिंग. बट व्हाट इज सरप्राइजिंग इज दैट ऑल दैट हैपेंड इन 2015. जब जिन की अगर हम बात करें इंडिया में, तो 2-3 से ज़्यादा ब्रांड के बारे में कोई भी नहीं जानता था. और इंडियन जिन की अगर हम बात करें, तो जिन के नाम पे जो मिलता था वो मैं क्या ही बोलूँ. The idea behind the name Greater Than Gin काफ़ी अजीब सा लगता है, confusing सा नाम लगता है. But the idea is that whenever you use this gin, whatever you're trying to make, the cocktail that you're trying to make, you will make something greater if you use Greater Than Gin. I don't mind the concept. I think it's a nice name. It's a unique take on it, and the name and the look of the bottle makes it instantly recognizable. This is a London dry gin. London dry gin यानी कि जो juniper का बेस होता है, काफ़ी ज़्यादा हैवी होता है juniper की क्वांटिटी, एंड यू विल गेट दैट सिग्नेचर नोट्स जो आपको दूसरी और लंडन ड्राई जिन से मिलेंगी. सो इट्स नॉट अनलाइक अदर जिन्स फ्रॉम इंडिया जो कुछ ना कुछ अलग ट्राई कर रही हैं. दिस इज़ अ जिन विच स्टक टू इट्स रूट, एंड आई थिंक जिस टाइम पर ये लॉन्च हुई थी, बिकॉज इट वॉज वन ऑफ द फर्स्ट जिन्स in India, actual genuine gins. So I'm not really surprised that they stuck to the basics and tried to perfect it first. And after that, they also launched a new gin called Hapusa, जो आपने I'm sure सुना होगा. Also made by Now Spirits. And that is not a London dry gin. That's a bit more experimental. Another London dry gin, ठीक है, इंडिया से आई है तो क्या बड़ी बात है. है तो लंडन ड्राई जिन ही ना. इंडिया में ऑलरेडी काफ़ी अच्छी लंडन ड्राई जिन मिलती हैं, ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं है. बॉम्बे सफायर, गॉर्डन्स, टैंकरे, बीफ ईटर अवेलेबल है ऑलरेडी, एंड दे आर ट्राइड एंड टेस्टेड. क्वालिटी इज़ ऑलवेज टॉप नॉच. सो वाई शुड यू गो फॉर एन इंडियन जिन? ये क्वेश्चन लोगों के मन में रहेगा. एंड ऑफ कोर्स इफ आई कंपेयर दिस विद अदर जिन्स, द प्राइसेस for Greater Than is definitely a lot less. In some states, in states like Delhi and Mumbai, actually the prices are not really a lot. But the one fact that I have to, where I have to praise Greater Than is that it opened the gateway for other gin makers. जब हम सक्सेस स्टोरी की बात करते हैं इंडियन जिन इंडस्ट्री की, उसमें से बहुत बड़ा हाथ है ग्रेटर देन का. जैसे अगर हम बात करें इंडिया में क्राफ्ट बियर की जो रेवोल्यूशन आई है पिछले कुछ सालों से, उसका जो अगर मैं बोलूँ कि बहुत बड़ा रोल, जो मेन रोल है, वो बीरा को जाता है. वैसे ही अगर जिन की बात करें, देन ग्रेटर देन प्लेज दैट रोल इन जिन इंडस्ट्री, एंड नॉट जस्ट फॉर इंडियन जिन्स. जब
जिन की पॉपुलैरिटी बढ़ी है पिछले कुछ सालों से, तो हम दूसरी और जिन भी देखते हैं कि इंडिया में आती हैं, जिन्स दैट यू वुड हैव नेवर सीन कमिंग टू इंडियन मार्केट, बट बिकॉज नाउ इंडिया इज गोइंग थ्रू दैट जिन बूम, देर आर मोर एंड मोर कंपनीज, Indian as well as overseas companies, that want to target, that want to tap into that Indian consumer base who enjoys gin. और of course इस चीज़ की जो वैल्यू है, जो मैं कह रहा हूँ, वो ना ही सिर्फ मैं कह रहा हूँ बट का पूरी इंडस्ट्री ने भी मानी है. इनफैक्ट नाउ स्पिरिट्स में अभी रिसेंटली डियाजियो ने एक स्टेक लिया है. डियाजियो इज़ probably the biggest liquor company in the world, and they have acquired a stake in Now Spirit. So you can probably see now some new products that might come out from Greater Bin. And before we get to the tasting of the gin, let me tell you about today's sponsor. Because जब हम बात करते हैं जिन की, तो जिन की बात अधूरी रह जाती है अगर हम टॉनिक वाटर के बारे में ना बात करें. And for me, my favorite tonic waters are Swami. Not only they are making amazing tonic waters, but they are really taking the carbonated beverage industry to the next level with their zero proof drinks, जैसे कि non-alcoholic gin and tonic and non-alcoholic rum and cola, which I absolutely love. I also love their ginger ale. I usually like to mix it with my Jameson whiskey, और ऐसे पी सकते हैं. And being summer season, you should also try their salted lemonade, which is absolutely fantastic, or the 2 cal cola. But for me, if I'm having gin, there is only one tonic water which I prefer, and that's Swami tonic water. I love their portfolio, चाहे हम बात करें low cal tonic water की या फिर my favorite grapefruit tonic water. It's all amazing. And now you can get a discount when you order your next Swami batch. Go to their website and type in the code MB's Man Cave and you'll get 10% discount on your order, and that applies to all the products. कोई भी product लीजिए आप स्वामी का, you will get that 10% off. So go and place the order. पहले वीडियो देख लो, because now we're gonna get to the tasting. So I think pricing की मैंने बात नहीं करी, आप लोगों को बताया नहीं है that this is priced at 1020 rupees in Delhi, which is a decent price for a good gin. But as I said, because of the recent pricing, आज की रेट में आपको बीफ ईटर जिन अराउंड 1100 की मिल जाएगी. So that is one area where I feel that it maybe lags behind as compared to imported gins, especially London dry gins. But चलिए, let's do some nosing. Straight away, you can feel the juniper berries. It's quite evident. अगर आपने कोई भी London dry gin पहले पी है, then you will instantly recognize that taste. हल्का हल्का जो juniper berries का एक fennel जैसा एक हल्का सा minty aroma आता है, citrusy aroma आता है. That is very recognizable to any gin drinker. So while it's not giving you something completely new, at least on the nose, but अगर familiarity की बात करें, as a gin drinker, if you are getting used to gin, then when you will hold this glass in your hand, you will be in a safe place. चलिए, let's get to the tasting. Quite familiar and surprisingly quite smooth as well. It's quite smooth for the price. Usually जब हम 1000 रुपीज़ तक की मैं कोई भी अगर अल्कोहल लेता हूँ, एक उसमें कैरेक्टर में कभी भी एक्सपेक्ट नहीं करता, वो होता है कि स्मूथनेस का. दिस इज़ सरप्राइजिंगली स्मूथ फॉर द प्राइस. In terms of taste, in terms of notes, I'm getting the standard juniper berry, quite strong. Some licorice as well, काफ़ी back end पे on during the finish, I can feel it. बहुत ज़्यादा लॉन्ग फिनिश नहीं है इसकी. दिस इज़ 40%. यूजली जब हम दूसरी जिन्स देखते हैं, इस जो लंदन ड्राई जिन्स, चाहे हम टैंकरे की बात करें, बॉम्बे सफायर, बीफ ईटर, दे आर ऑल more than 45%. So you get a bit of a spike in terms of alcohol percentage, and the aftertaste as well, because it lingers on. This falls slightly flat अगर हम finish की बात करें, but as I said, it's quite smooth, so it's quite pleasant and refreshing as well. Especially अगर आप एक नए gin drinker हैं,
you are starting your gin journey, then this is definitely a great gin to start with. For me, being somebody who lives in Delhi, हो सकता है अगर आप गोवा जाते हैं, वहाँ पे आपको जिन 700 की मिल जाएगी, which is an amazing deal, a great buy. For me, being from Delhi, if I have to pay $1,000, maybe I'll pick up something else. Maybe I'll put in another $100 and get something else. Will I say that this is the best London Dry gin? Probably not, but that's not the reason why I like Greater Than Gin. जैसे मैंने बताया कि अगर हम हिस्ट्री, एक जिन की हिस्ट्री के ऊपर, इंडिया की हिस्ट्री के ऊपर एक किताब लिखी, देन ग्रेटर देन जिन के ऊपर एक अलग से चैप्टर होगा. इट हैज़ दैट काइंड ऑफ सिग्निफिकेंस, एंड फॉर दैट रीज़न आई लव ग्रेटर देन जिन. I always have one bottle of this gin in my bar, in my collection, because I love using it. और जब बॉटल ख़त्म हो जाती है तो मैं इसी की बोतल में पानी भर के भी रख लेता हूँ, because I honestly quite like the bottle. It has a simple design, minimalist, just like what I like, and I think this is probably one gin which I hope goes quite far. This is not probably a gin जिसे मैं recommend करूँगा कि आप अगर कॉम्प्लेक्स कॉकटेल्स बना रहे हैं, नेग्रोनीज बना रहे हैं, उसमें यूज़ करिए. बट if you want to try some basic gin cocktails, maybe gin and tonics, then this is probably a good gin to start with. In terms of taste, I will give this gin 8 out of 10. But अगर मैं बात करूँ value for money की, I think this is a great gin for this price. The cheapest gin you can get, no matter where you live, अगर आपके स्टेट में अवेलेबल है, then this would be the cheapest gin you can get. So I'll give it 9 out of 10 for value for money. तो इसका MB's Man Cave स्कोर होता है 8.5 out of 10. But what do you guys think? आपको क्या लगता है, क्या राय है आपकी ग्रेटर देन जिन के बारे में? If you are an experienced gin drinker, if you like drinking gin a lot, then what do you think? या फिर अगर आप अपनी जिन की जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं, आपने 1, 2 या 3 जिन ट्राई करी हैं, और अगर ये ट्राई करने का मौका मिला तो कैसी लगी आप लोगों को? Do let me know, because I am actually quite intrigued to know कि आप लोगों की क्या राय है इस जिन के बारे में. Forget about the price factor, the value factor, because yes, it is the cheapest gin, but in terms of taste, what do you guys think? लाइक करिए वीडियो को, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, चैनल पर सब्सक्राइब भी करिए. मिलते हैं जल्दी, तब तक के लिए पियो.